काल का क्लास, हेलो, मेरा आवाज आ रहा है ना? मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। बोल रहा हूँ काल जो क्लास लिए थे उस पे कुछ डाउट नहीं है ना? नो सर। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं, बाकी आने दो जो आएगा। So last class we have started matrix. Last class we have started the relation. Okay, we have discussed about the definition of relation, and today also we will continue with relation. Now, next topic is matrix representation of relation. Matrix representation. Okay, matrix representation of relation. So what we have discussed, that suppose if you have a set A consists two element A and B, and another element B which consists two element 1, 2. Now your Cartesian product A cross B, that we can take A, 1, A, 2, B, 1 and B, 2. That is your Cartesian product. Now any set R which is subset of A cross B is called relation. Okay, so now if we assume that your R is equals to A cross B, then it is also a relation. This R is also a relation because A cross B is obviously your A cross B is obviously your subset of A cross B. So it satisfies the condition of relation. Therefore, your R is a definition of relation. Therefore, R satisfies the relation condition. So R is a relation. Now, how will you represent it as? How will you represent it as matrix? So what we will do, we first suppose you have A, so the element you just write the element which A have, you are writing it as a row. Okay, so A has two element A, B, so we have taken two row A and B. Now B has two element 1 and 2, so you can write it is as a column. Okay, so now A, 1, A, 2, similarly B, 1, B, 2. That is actually your matrix representation of the relation R. How I am getting A1, A2, okay, B1 and B2, like this. Now suppose if you have a relation R which is subset of A cross A, so therefore you can see here these two sets are same. Now if you take your A is A comma B, then your matrix representation will be, you have to write AB in column and AB in row also. Okay, so now A comma A, this is your A comma B, this is your B comma A, and this is your B comma B. So this is your matrix representation of
a relation. Okay, now if you have a matrix, means if you have a relation, then you can find the matrix representation of that relation by this way. Okay, now if this matrix has only the diagonal entries, without the diagonal entries all the entries are zero. So that means if your matrix is like that, a comma a 0, I'm taking here for suppose 3 elements. This is your 0, this is your b comma b, this is your 0, 0, 0, c comma c. Okay, so if you have only the diagonal entries, that is a comma a, b comma b, c comma c, then we will call it as a diagonal relation. Okay, so the definition of diagonal relation we will denote it as is a delta a. Okay, that is your a to a. Here the two set is same. Now diagonal a, which is actually your x comma x, such that x belongs to a. So x comma x, so that means your a comma a. Okay, b comma b and c comma c. Understood? That is your diagonal relation. Okay, now I am going to the uh, part of this thing, that reflexive relation. I hope all of you have know what is the definition of reflexive. All of you have know now. Yes, sir. Reflexive relation. Reflexive relation means a relation R is reflexive if x comma x belongs to R for all x. Okay, so for all x belongs to A. Here you have to remember one thing, that is this part. For all x belongs to A. Okay, so that means what? See, suppose your relation is from A to A. So that means your relation is subset of A cross A. Okay, now if your A have three element A, B and C, and if your R is like that, A comma A, B comma B, is it a reflexive relation? Is R reflexive? Yes or no? Is that relation reflexive? Yes, no. Because what? Why? Why it is not reflexive? Every element of set A is not in the form Yeah. of A. So this condition is not satisfied, that for all x belongs to A, x comma x belongs to R. Okay. So now since you can see here that your set A has three elements A, B, C. Now this relation will be a reflexive relation if this relation contains A comma A, B comma B and C comma C. But this relation has this, but C comma C is not belongs to this relation. So C comma C is not belongs to that relation. So therefore R is not reflexive. Okay. Therefore R is not reflexive.
And also suppose if you have a relation like that, R is equals to A comma A, B comma B, C comma C, and A comma B. Now is it a reflexive? Yes, sir. Now is it reflexive? Its answer is yes. Okay. So why is it reflexive? Because here all the A comma A, B comma B, and C comma C is present. Don't think about this element A comma B. Okay. You have to require only A comma A, B comma B, and C comma C. Is that present or not on that set? You have to check it. If it is present, then you can say that it is reflexive. Clear? Okay. Now, if you have said, I'm giving you another example. R, okay, or you just it is given like that in the questions that less equals to on real number. Is it reflexive? Tell me, is that reflexive? That less equals to on real number. Yes, sir. Now, why is it reflexive? Yes, sir is equal to Hmm. any number can be equal to. Any number can be less equals to. Yeah, that I want clear, more clearly we have to say it. Aniket, batao. Less equals to on real number. Is it a reflexive or not? Sir, होगा sir. Yes, sir. क्यों होगा? Because because all numbers are belongs to real numbers. हाँ. So that means your real number जो भी होगा होगा. ठीक है. Real number is all the numbers. So it may be integer or it may be point, whatever. Okay. Now suppose if x is your real numbers, okay, which is your belongs to R. Now here it is relation is here less equals to. Relation is your less equals to. So now you can write any number that means x. It is obviously less equals to that number. Since here equals to condition is given, so that means x is obviously satisfies less equals to. So therefore x is belongs to sorry R is, therefore x is belongs to R comma R. Okay, x comma x, this is belongs to your relation. If R is relation, then x comma x belongs to relation. So therefore your less equals to is reflexive relation. Okay, now in that place, if it is given that only less than, is it reflexive? Is it reflexive? No, sir. So it is not reflexive because here you cannot say that x less than x, this condition is not valid. Okay, any number is not less than that number. So therefore this condition is not satisfied. So therefore this relation is not reflexive. Okay. So now similarly, if you take getter equals to, that is your reflexive relation. But if you think about only getter, then it is not reflexive. Okay. Now take another one, that the division property. That means division on real number. It is division, okay? Division on real number.
Now, can you tell me, is it reflexive? Can you tell me, is it reflexive or not? Yes, sir. Okay, it is reflexive because any number Yes, div divides that number. Okay, so therefore, this division relation is a reflexive relation. सर इसका एग्जांपल एक जैसे कि सपोज x डिवाइड x, इट इज ऑब्वियसली ना, एग्जाम्पल देने का कोई जरूरत नहीं है. if any relation will not satisfy, then you have to give the example. But if it is satisfies, then you can prove it by uh, directly. Say you know that if your x comma x belongs to relation, then you can say it is reflexive. Okay, now what is x comma x? So यहाँ पे relation is your given division. So you know that any number is obviously divides that number. Okay, so any number divides that number, so that means obviously it satisfies the relation properties. So therefore you can say it is reflexive relation. But if it is not satisfies, then only you have to give the example. Okay. अच्छा, सिंपल सा एक प्रॉपर्टीज है, या फिर यू जस्ट रिमेम्बर इट. एनी सुपरसेट of reflexive relation is reflexive. Is that true or false? false, sir. also Why false? तो सुपर सेट नहीं होता उसका सबसेट होता है. नहीं नहीं, प्रॉपर्टीज सही से पढ़ो. सूरज का वॉइस बहुत कटता है. सूरज your voice is not clear. I don't know why. Any one of you see the properties, first read it clearly. Any superset of reflexive relation is reflexive. Is that true or false? True, sir. True or false? कोई और रिप्लाई दो. Is this superset, any superset of a relation, reflexive relation, is reflexive or not? false होगा सर. False होगा. क्यों? सर अगर सुपर सेट में अगर कोई भी अगर सेट ले, अगर जैसे 1 1 1 2 1 3 और 2 3 अगर इसे करके ले लें, अगर हम सेट लेते हैं 1 2 3 लेते हैं, और सुपर सेट कहने का मतलब उसमें रिफ्लेक्सिव लीजिए ना, 1 2 3 एक सेट. सुपरसेट का मतलब पहले क्लियरली पता है ना, व्हाट इज सुपरसेट? या सर ऑल टोटल ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ सबसेट. नहीं, जैसे सपोज ए सबसेट ऑफ बी. ओके, का सारा एलिमेंट बी में प्रेजेंट. सो बी इज हियर superset. यस सर. If A is subset of B, so that means B is your superset. Okay, so here what is it is given, any subset of any superset of a reflexive relation. So this is your reflexive. Okay, this is your reflexive. Now this one is reflexive or not? It is the question actually. सर ऑलवेज नॉट ट्रू सर. Why not always? Since see,
whatever the element A have, all the elements should be goes to B, है ना? एक A में जितना एलिमेंट रहेगा सब कुछ B में ऑब्वियसली जाएगा एंड एक्स्ट्रा भी जाएगा. Since B is superset, so that means B has more element than A. Okay, and it is obvious that all the elements which is belongs to A, that is obviously belongs to B. Now since A is reflexive, so that means A contains all the elements which will be reflexive relation, है ना? So therefore B obviously satisfies the reflexive relation. Clear? So actually this is true. Understood what I am saying? Yes, Yes, sir. sir. Okay. Now second one is, if R is reflexive, on a set A, then what about R inverse? Inverse relation, is it reflexive? Inverse का भी मैं कल बताया था, what is inverse? And if you Yes, Yes, sir. sir. True. Reflexive होगा True, sir. sir. उसका Yes, बस sir. flip हो जाता है. okay, good. So I hope all of you have understood. So I'm not explaining it. So it is also true. Okay. Now third one is, if R and S, if R and S both are reflexive, on A, then R union S and R intersection S is reflexive or not? Tell me. Give me quick answer quickly. R union S तो होगा sir reflective. R R intersection union S होगा reflexive and R intersection S नहीं होगा सर ये. नहीं होगा sir. क्यों नहीं होगा? दोनों होगा सर. दोनों होगा सर. दोनों होगा होगा सर. सर. होगा सर. सब एक साथ बताने से तो नहीं होगा, कोई एक बता दिया तो बाकी सब होगा. क्यों होगा? Give me the reason. I want the exact reason that you have understood it clearly. सर बिकॉज़ सर दोनों दोनों जब रिफ्लेक्सिव. सर सेम है, जब दोनों रिफ्लेक्सिव है तो उसका सर Yes, इंटरसेक्शन yes. भी तो रिफ्लेक्सिव होगा. Yeah, actually it is the right answer. See, since R is reflexive on A and S is also reflexive on A, दोनों same set के ऊपर reflexive है. ठीक है? So suppose A has two element. Okay, मान लो 1,2. Now कोई भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होना है तो उसको 1,1, 2,2 उसमें ऑब्वियसली बिलोंग करेगा, है ना? सो देयरफॉर R सेट में भी ये बिलोंग करेगा एंड S सेट पे भी ये भी बिलोंग करेगा. एंड एक्स्ट्रा एलिमेंट और भी कुछ रहे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है. अभी हम अगर यूनियन लेंगे तो ऑब्वियसली 1,1, 2,2 इसमें आ जाएगा एंड अगर इंटरसेक्शन भी लेंगे उसमें भी 1,1, 2,2 आ जाएगा. सो you can say very easily that R union S and R intersection S both are reflexive. Okay, it is the main thing actually, since it is reflexive on a same set. Okay, and you have to remember it. Okay, same set के लिए ही होगा. अगर यहाँ पे अलग सेट हो जाएगा तब तुम्हें सोचना पड़ेगा. Clear? Now tell me, smallest number of element on a reflexive relation क्या होगा? Smallest number of element in a reflexive relation क्या होगा? एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन में सबसे
कम कितना एलिमेंट हो सकता है? If your A has n element, okay, tell me what is the smallest number? N, sir. 1, sir. Minimum 1 or maximum n. वन Minimum होगा 1, सर, हाँ 1 होगा, मिनिमम वन। क्यों 1 होगा? एन होगा सर। n होगा सर, Sir, रिफ्लेक्सिव होने के लिए suppose sir, सारा एलिमेंट का बनना जरूरी है। Girls are सर sitting डिवीजन वाले silently. केस में वन Anyone ही of ना होगा सर। हाँ? डिवीजन वाले केस में n डिवाइड बाय n करेंगे तो हाँ। मिनिमम तो ना, वन आएगा। n एक n is your number of element. Listen, n मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ your relation actually r which is a cross a. Okay. Now इस a में n number of element है. Okay, that is your cardinality of a is n. a में n number of element है. Now I am asking you, this r is reflexive. Okay, r reflexive होगा सबसे कम कितना एलिमेंट लेके, उससे कम हो जाएगा देन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, बट उससे n होगा ज्यादा सर, होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर 1,1 से नहीं N. See, n होगा सर, n होगा सर, एन n। होगा सर। हाँ एन होगा, N. एक्चुअली एन होगा, क्योंकि देखो सपोज ए हैज एन एलिमेंट्स, तो दैट मीन्स व्हाट, ए में 1 2 3 इस तरह एन नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, है ना। नाउ ए क्रॉस ए मतलब समझ रहे हो उसमें क्या क्या एलिमेंट रहेगा, 1,1 इस तरह, 2,2 डॉट 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 n, बाकी और भी एलिमेंट रहेगा, ठीक है। नाउ कोई भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होगा, एक रिलेशन आर, ये रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब 1,1 2,2 3,3 ये सब प्रेजेंट रहेगा, देन ओनली यू कैन से इट इज रिफ्लेक्सिव, है ना। इसमें से अगर कोई भी एक प्रेजेंट नहीं होता है देन यू कैन नॉट से इट इज रिफ्लेक्सिव, बिकॉज फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर ऑल एक्स, है ना। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में प्रॉपर्टीज में बोला गया था कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए यू शुड हैव x, x बिलोंग्स टू आर, है ना। तो इसमें से कोई भी एक को हटा दोगे तो नहीं होगा, लेकिन सबको रहेगा तो हो जाएगा, एक्स्ट्रा हमें कुछ नहीं लेना है, तो सबको लेना है, तो दैट मीन्स व्हाट, 1 2 3 डॉट 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 n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देयरफॉर स्मॉलेस्ट होगा अगर n होगा, ठीक है, क्लियर। यस सर, Now similarly if I ask you maximum number, then what will be the answer? What is the maximum number of element in a reflexive relation? What will be the answer? बोलो। इस तरह क्वेश्चन एक ऑब्वियसली मिलेगा, स्मॉलेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर, या फिर नंबर ऑफ रिलेशन, पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो इससे इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दो। इफ यू हैव डाउट देन आस्क, largest number of element, n स्क्वायर हुआ y in एन square, स्क्वायर। सर। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम लेना है रिलेशन तो एन अगर स्क्वायर। 1 से देखा जाए तो 1 से सारे पार्ट्स, अगर जैसे a इक्वल्स टू जो 1 टू अप टू n दिया हुआ है सेट, अगर 1 से अगर रिलेशन देखे बनाया जाए तो 1 से लेकर अप टू n तक होगा, ऐसे ही सारे n एलिमेंट तक का बनाना पड़ेगा। हाँ रिफ्लेक्सिव होने के मतलब लिए सबको रखना फुल फुल जो सेट होगा वो तो सेट ऑफ, मतलब ए क्रॉस ए जो सेट होगा दैट इज ऑब्वियसली योर रिलेशन, ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यस okay. A cross A is obviously a reflexive relation, because why, because they are all the elements, this is obviously belongs and another extra element will be belongs there, and your A cross A is the total set, okay. And in the set A cross A you have
n square number of element. Okay, so therefore its answer will be n square. ठीक है? Its answer will be n square. Okay, good. Now, can you tell me what is the number of reflexive relation? Now the question is, what is the let cardinality of A is n. Now, what is the number of reflexive relation possible? बताओ, ये बता सकते हो? If your set A has n number of element, now what is the number of reflexive relation possible? मतलब कितना reflexive relation तुम find कर सकते हो उस सेट से? Any idea? yes sir बता रहा हूँ बताओ. n होगा सर n नहीं, कोई और? सर 1 सर, बार बार तो सर सेम ही लिखेंगे ना. नहीं, maximum number of relation. alternate Same. Yeah, Julie, how are you saying? It's true, whatever the answer you are saying. सर आंसर बस पता है, कैसे होगा पता नहीं, वो कहीं याद किया, मतलब फॉर्मूला की तरह लिखा हुआ था. Okay, it's good. That is also required for your GATE examination. You have to remember the answer. Any one of you? कोई और है जो बता सकते हो? Ragini, can you tell me? राजीव, बाकी सब पता नहीं है शायद. विकास यस सर. हाँ बोलो, कुछ आइडिया है इसमें क्या हो सकता है? नो सर, अभी तो सोच रहे हैं सर. अच्छा, ठीक है. तो देखो, फर्स्ट हम जो मान ले, मतलब एज्यूम कर रहा है कि ए में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है. सो आई एम एज्यूमिंग इट इज एज a1 डॉट 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 an. दैट इज योर a. ओके, सो नाउ व्हाट इज योर a क्रॉस a? So you know what means, I am not written here. You know what is your a cross a, and here total number of element will be n square. Since it has n, so here it will be n square. Clear? इसमें कोई डाउट नहीं है. Now एक रिलेशन यहाँ से, मतलब हम एक रिलेशन लेंगे R, which is subset of a cross b. That is, this R is reflexive. कब रिफ्लेक्सिव होगा? जब इसमें a1, a1, a2, a2 डॉट 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 an, ये प्रेजेंट रहेगा. ठीक है. सो इस R को हम रिफ्लेक्सिव तभी बोलेंगे जब a1, a2, a2, a2 इस तरह an रिफ्लेक्सिव रहेगा. सॉरी, इस तरह ये बिलोंग्स रहेगा. Now suppose it is your R1. Now it is reflexive. If your R1 is a1, a1, a2, a2 dot 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 an, it is reflexive. Yes or no? yes sir हाँ. Now इसमें number of element कितना होगा? n होगा. n होगा Now how many number of element present in a cross a?
विदाउट दिस, इसको छोड़ के बाकी ए क्रॉस ए में कितना एलिमेंट प्रेजेंट है? दैट इज योर N एन square स्क्वायर minus माइनस एन। माइनस एन। N. Yes, sir. ठीक है, सो नाउ सपोज दिस इज योर ए सिंगल सेट, ओके, दिस इज योर सिंगल सेट and the remaining other element is there, that remaining other, that means n square minus n. so अभी देखो मैं एक्चुअली क्या बोलना चाहते हो, जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो सब एलिमेंट को लेके तुम कितने नंबर ऑफ सबसेट फाइंड कर सकते हो? इफ योर सेट हैज n एलिमेंट, so that is your 2 to the power n square minus n, ठीक है ना? अभी जितना सबसेट है सभी सबसेट में अगर तुम इस एलिमेंट को उसमें एंट्री कर दो, दिस सेट को, देन ऑब्वियसली ऑल दैट सेट विल बी रिफ्लेक्सिव. Yes, sir. So that is your actually total number of reflexive relation, and Julie, you can verify that it is your answer, 2 to the power n into n minus 1. So understood what I am saying, or should I repeat it? All of you have understood, or should I repeat it again? Clear, sir. सब शांत है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है. क्लियर से। क्लियर ना? क्लियर है सर. यस. ओके जूली, अभी ये क्लियर हुआ क्यों हो रहा है ये 2 to the power n minus 1 n into n minus 1? Yes, sir, clear. Okay, so now next thing is I R this one is reflexive relation. What is reflexive relation? The What x is- comma x don't belong to. Yes, Yes, sir. for all A. So if your R is maps from A to A, that means R is subset of A cross A. Now if your A comma A या फिर X comma X, that is not belongs to R, for all A belongs to A, then we can say that R is reflexive. ओके कोई भी एक यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहेगा. सी सपोज यू हैव a is equals to 1, 2, 3. now your r is 1, 2, 1, 3 and 2, 3. so is this, it is reflexive because 1, 1, 2, 2 and 3, 3 is not belongs to this set, so therefore it is reflexive. Clear? But if you consider a set R1 like 1, 1, 1, 2, 1, 3, now is it reflexive? Yes, sir. R1. I'm not asking you about No, R. sir. Yes, sir. Reflexive. Why it is reflexive? For all A belongs to A, sir, नहीं. लेकिन ये तो है 1, 1. So for all A belongs to. हाँ तो for all A ये नहीं होना चाहिए ना. For all A belongs to A comma A not belongs to R. कोई भी एक नहीं रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो एक हो जा रहा है 1, 1. ये reflexive होगा sir. हाँ, it is also irreflexive. Okay. Now, this thing that less than relation on R या फिर greater than relation on R. What is this to? Is this to reflexive? Is reflexive?
ये रिफ्लेक्सिव होगा। ये दो इरिफ्लेक्सिव होगा ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे लेस देन कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो पाएगा। सॉरी, मतलब ए कॉमा कोई भी नंबर उस नंबर से लेस देन नहीं हो सकता है, सो दैट मीन्स दैट इज नॉट बिलोंग्स टू दैट रिलेशन। मतलब मैं बोल रहा हूँ एक्स नॉट लेस देन एक्स, ये कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। सो देयरफॉर x comma x is does not belongs to x for does not belongs to r for all x, so therefore it is irreflexive relation. Now tell me smallest number of element in irreflexive relation. सेम अभी कि स्मॉलेस्ट नंबर कितना होगा एलिमेंट, smallest number of element in irreflexive relation. बताओ क्या होगा? I want answer from you. Just give me. क्या होगा? N, sir. Smallest number पूछे, smallest number of element in irreflexive relation. एक irreflexive relation बोलना होगा जिसपे सबसे कम एलिमेंट रहेगा, वो कितना हो सकता है? एक। जीरो। यस, जीरो। व्हाई जीरो? नहीं होगा सेम, मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। एक तो होता है जो कि ए क्रॉस ए नहीं है प्रेजेंट होना चाहिए, अब सबसे मिनिमम तो कुछ भी नहीं होगा। हाँ, एक्चुअली योर phi is subset of A cross A. Okay, so that means phi is a relation. ये तो हो ही सकता है। Since phi is subset of A cross A, so phi is your relation. Now इस phi में तुम्हारा कोई भी x cross S नहीं बिलोंग्स करेगा, है ना? So therefore phi is your irreflexive relation, but phi is not reflexive relation. Phi is irreflexive. Clear? So therefore the number of smallest element in the irreflexive relation is 0. Clear? Now next one is largest number of, ये वाला बोलना चाहिए, largest number of element in irreflexive कितना होगा बोलो? लार्जेस्ट नंबर कितना होगा? थोड़ा सोच के बताओ। Tell me what is the largest number of element in the irreflexive relation? सर n-1। n/2. n-1 n/2 नहीं हो रहा है। पहले एक बात देखो, रिफ्लेक्सिव के लिए लार्जेस्ट मिनिमम कितना था? अच्छा कोई और बताओ। जो दो आंसर आया है वो सही नहीं है, n/2 भी सही नहीं है, और एक क्या बोला, n या कुछ बोला, हाँ दोनों आंसर, हाँ n-1 नहीं नहीं सेम नहीं है। कुछ सोचो, ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे सोचना पड़ेगा, इस तरह ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है? एग्जाम पे इसी तरह क्वेश्चन दिया जाएगा, so you have to think, otherwise you will not be able to answer. यहाँ पे क्या बोला गया है? इर्रिफ्लेक्सिव, ठीक है? इर्रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब x, x नहीं बिलोंग्स करेगा, ठीक है?
है ना? यस और नो? यस x कॉमा x पे x जब नहीं बिलोंग्स करेगा रिलेशन में, देन यू कैन से इट इज इररिफ्लेक्सिव. सो जितना x कॉमा x है उसको निकाल दो ना सेट से, दैट इज योर मैक्सिमम नंबर ऑफ सेट होगा. अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? अगर कोई भी एक x कॉमा x उस रिलेशन पे, n या समवन सेइंग n स्क्वायर, n square square minus minus n. n yes, minus n n. square minus n, n square minus n is the answer. Understood why n square minus n? I hope you understood it. Okay, now the next one is number of reflexive relation. कितना होगा? Number of reflexive relation. If your set A has n, cardinality of A is n, the number of reflexive relation क्या होगा बताओ? की पावर n इंटू n प्लस 1/1. अच्छा सर, 2 to the power? वो n स्क्वायर माइनस n है, वहाँ प्लस हो जाएगा बस. नहीं, प्लस नहीं होगा, ये तो वही होगा कि 2 to the power n square minus n, क्योंकि मैक्सिमम एलिमेंट है मैक्सिमम एलिमेंट है n स्क्वायर माइनस n. ठीक है, अभी इस n स्क्वायर माइनस n को लेके तुम हाउ मेनी नंबर ऑफ सबसेट यू कैन फाइंड, दैट इज 2 to the power n स्क्वायर माइनस n. सो देयरफॉर हियर इट इज आल्सो 2 to the power n into n minus 1. ठीक है, सो फॉर बोथ द reflexive and irreflexive, total number of relation is 2 to the power n into n minus 1. Okay, so the next is symmetric. Symmetric तो पता ही है सबको. Symmetric में क्या है कि if your x is related to y, where for all xy belongs to R, then y related to x. If this condition is hold, so if x related to y, where for all xy belongs to R, then y related to x. That means अगर x related to y रहेगा, then y related to x रहना चाहिए, then only you can say it is symmetric. If ये नहीं हो रहा, नहीं मिल रहा है उसी सेट में, उस सेट में, then you can say it is not symmetric. Okay, so now take the example that less equals to on real number. Less equals to on real number, is it reflexive? Sorry, is it symmetric? Less equals to on real number, is it symmetric? no sir. No, इक्वल sir. टू के केस में सर हो सकता है, बट सर तो एक वो केस में होगा लेस तो देन हो के ही केस में नहीं जाएगा हो ना, सकता. इक्वल टू कंडीशन में तो हो ही जाएगा, कोई तो प्रॉब्लम ही नहीं है. एक केस में देखो, जनरली 2 लेस इक्वल्स टू 3, दिस इज ट्रू. 2 लेस इक्वल्स टू 3, दिस इज ट्रू. Yes, sir. Yes, sir. लेकिन 3 लेस इक्वल्स टू 2, इज इट ट्रू? No, sir. सो नहीं होगा, है ना. तो नहीं होने के लिए हमें सिर्फ सिंपल सा एक एग्जांपल ही काफी है. अच्छा, नेक्स्ट इसमें भी प्रॉपर्टीज जो है कि अगर if R is symmetric,
then R inverse is symmetric or not? बताओ क्या होगा इसमें? If R is symmetric, then R inverse is symmetric or not? Yes, sir. किसी को डाउट है ये सिमेट्रिक नहीं होगा? फिर भी इसका प्रूफ जो होगा देखो, R is symmetric, so that means what? X related to Y, X related to Y, it happens, then if X related to Y it's happen, then Y related to X. Okay, चलिए यहाँ पे then पहले लिख दो, then Y related to X. So X related to Y अगर प्रेजेंट रहेगा, then Y related to X obviously प्रेजेंट रहेगा. Now what is your R inverse? So देखो, if R जो सेट है उसमें X, Y भी प्रेजेंट है, again Y, X ये भी प्रेजेंट है. Now if you take R inverse, so what will happen? R inverse के लिए क्या होगा? So इसका हो जाएगा Y, X, इसके लिए हो जाएगा X, Y, है ना? So देखो Y, X is related to R inverse, means Y R inverse X, ये तो हो ही जा रहा है. Then obviously your X ये तो बिलोंग सी करेगा. ये अगर सिमेट्रिक हो जाएगा, then obviously your R inverse is also symmetric. ठीक है. Next question is, or next properties, that is next one. If R and S are symmetric, then what about R union S and R intersection S? If R and S is symmetric, then tell me R union S and R intersection S. Is this two is symmetric? बोलो ये क्या होगा? If R and S is symmetric, then R union S is symmetric? Yes or no? Answer though. If your R and S is symmetric, then R union S is symmetric? Yes or no? Yes. Yes, sir. रीजन क्लियरली समझ में आ रहा है या फिर मैं डिस्कस करूं या फिर ऐसे ही बोल दिया? यस सर. सुशील? नहीं सर, रीजन भी आ रहा है. ओके गुड. आ रहा है सर समझ. सो बोथ आर सिमेट्रिक. ओके ठीक है, इसको याद रखना. ये चीज बहुत मतलब मैं देखा हूँ कि दो तीन बार आया है. तो टाइम मिलेगा तो प्रीवियस ईयर पे भी जाएंगे तो उस पे भी दिखा देंगे कि क्या क्या है, मतलब कैसे आया है क्वेश्चन. Now next is smallest number of element in symmetric relation कितना होगा? स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा बताओ?
एक रिलेशन जो सिमेट्रिक होगा एंड वो स्मॉलेस्ट होगा, ठीक है, तो उसका नंबर कितना होगा? तो ये स्मॉलेस्ट नंबर कैसे फाइंड होता है सर? गेस कर रहे हैं, सिर्फ नंबर ही गेस करके बता दे रहे हैं। नहीं, हम स्मॉलेस्ट मतलब ऐसे बोलना होता है कि वहां पे उससे छोटा तुमको सेट नहीं मिलेगा जो सिमेट्रिक होगा, इस तरह मैं बोल रहा हूँ। एटलीस्ट मतलब जो जो एलिमेंट कुछ कौन सा एलिमेंट लेके उसको सिमेट्रिक बनना होगा। सिमेट्रिक बनाने के लिए व्हिच एलिमेंट आर रिक्वायर्ड, ठीक है, उस एलिमेंट को लेना है एंड यू हैव टू सी दैट इट इज स्मॉलेस्ट नंबर। उससे कम होगा तो वो सिमेट्रिक रिलेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। ऐसा तुम्हें सेट फाइंड करना होगा। ऐसे में तो सर 2 एलिमेंट होना चाहिए मिनिमम। तो 2 एलिमेंट नहीं होगा तो नहीं होगा, मतलब 2 एलिमेंट अगर अच्छा 2 एलिमेंट नहीं होगा तो होगा, ठीक है। मिनिमम तुमको 2 समझ में आ रहा है, ओके देन एनीवन? 2 एलिमेंट तो कोई समझ में आ रहा है। सबको 2 सर एलिमेंट, 1 भी लेकिन होगा तो सिर्फ 1 1 भी होगा होगा सर। तो सर सिर्फ हाँ 1 भी होगा तो सर हो नहीं जाएगा सिमेट्रिक 1 1 1 1। 0 होगा तो तब नहीं होगा क्या? 0 अच्छा पहले हमको ये चीज बताओ कि सपोज A इज दिस वन, ओके। नाउ सपोज योर R इज लाइक दैट 1, 1, 2, 2, 3, 3. Is it asymmetric? यस सर, Hmm? यस सर होगा। क्यों यस होगा? सर। सर इसको उल्टा भी करेंगे तो वही होगा ना सर, और इस हो तो जाएगा। तो ये सिमेट्रिक होगा, ठीक है, यस सर। गुड। नाउ सपोज इफ यू टेक R is equals to 1, 1, is it symmetric? यस सर सिमेट्रिक है। ये भी यस सिमेट्रिक होगा। यस सर, तो यहाँ पे एक चीज देखो, हम लोग वो वाला चीज नहीं देख रहे कि फॉर ऑल एक्स वाई। डेफिनेशन में हम बताए थे कि एक फॉर ऑल एक्स वाई लिखा हुआ है ना। हम जब यहाँ पे डेफिनेशन दे रहे थे, यहाँ दिख रहा है ना, तुम लोगों को दिख रहा है ना? मैं जो Yes, पेज sir. में आया हूँ उस यस सर। पेज पे यहाँ पे देखो, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर देन वाई रिलेटेड टू एक्स, ये वाला चीज यस सर, इसमें फॉलो हो रहा है क्या? इसमें हो रहा है या नहीं? नो हो सर, रहा है सर। 1 तो बिलोंग कर। ऑल यस तो सर नहीं हो कर रहा रहा है। फॉर ऑल तो नहीं कर रहा है, सो दैट मीन्स तुम नो सिमेट्रिक सर। बोल नहीं सकते हो, है ना? सर रिलेशन, इस रिलेशन के लिए अगर एक्स वाई अगर देखा जाए तो दोनों सेम ही है। हाँ एक्चुअली नहीं, यहाँ पे ये चीज है कि पहले तुम्हें ये चीज देखना पड़ेगा कि अगर कोई भी एक्स रिलेटेड वाई प्रेजेंट है कि नहीं। अगर प्रेजेंट हो जाएगा वो, तब तुमको चेक करना पड़ेगा फॉर ऑल वाला बात, ठीक है। अगर कोई भी प्रेजेंट नहीं है तो कोई बात ही नहीं है उसको चेक करने का। लेकिन उसमें अगर कोई प्रेजेंट हो जाता है, जैसे कि ये वाला रिलेशन में हम तुम लोगों को दिया हूं R is equals to 1, 1, इसमें कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, मतलब बाकी सब प्रेजेंट नहीं है, तो उसके लिए सोचना नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं और एक एक्स्ट्रा एलिमेंट दे दिया दैट इज 1, 2, सो x, y यहाँ पे प्रेजेंट हो गया, ठीक है, तब तुमको फॉर ऑल वाला बात होगा
कि इस तरह अगर कोई भी एक प्रेजेंट हो जाएगा देन ऑब्वियसली 2,1 बिलोंग्स करना पड़ेगा इसी सेट में, देन यू कैन से दैट दिस आर इज सिमेट्रिक। लेकिन your this element is not belongs to that set, then you cannot say it is reflexive, it is symmetric. But the condition is if you remove all these two elements, only 1,1 is there, then also you can say it is symmetric. Okay, यहाँ पे 1,2 मतलब x, y बिलोंग्स ही नहीं कर रहा है, तो दैट मीन्स तुम्हें वो फॉर ऑल वाला बात यहाँ पे चेक करने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अगर प्रेजेंट रहेगा देन वो फॉर ऑल वाला बात आएगा। ठीक है, तो नाउ सिमिलरली यहाँ पे और एक चीज मैं बोल रहा हूं, इफ यू सेट इज 5 देन इज इट सिमेट्रिक। इफ योर सेट इज 5 is obviously a relation that already we have know because phi is subset of A cross A. So phi is obviously a relation, ये तो हम लोगों को पहले भी हम बताए हैं। Now is that relation is symmetric? Phi is symmetric or not? बताओ, phi symmetric है कि नहीं? तुम बाकी सब कोई कुछ नहीं बोल रहा है सर। है ना? क्यों है? क्लियरली उसका आंसर पता है? यस रीजन, उसका रीजन क्लियरली पता होना चाहिए। एंड फाइव इज योर स्मॉलेस्ट सेट, क्योंकि फाइव को छोड़ के और स्मॉलेस्ट सेट तुम कुछ भी फाइंड नहीं कर पाओगे। सो देयरफॉर स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन सिमेट्रिक रिलेशन इज 0। ठीक है, Yes, sir. is okay. Now largest number of element in smallest in symmetric relation, largest number of element in symmetric relation क्या होगा? सारा नंबर हो जाएगा जो प्रेजेंट हो, कितना मतलब होगा? जैसे सारा नंबर हो जाएगा ना, जैसे हाँ, सारा नंबर हो जाएगा। सो दैट मीन्स इट इज योर n स्क्वायर। सब रहेगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब रह जाओ तो उसी को तुम बोल दोगे, वो तो ऑब्वियसली सिमेट्रिक होगा ही, ऑल द एलिमेंट्स बिलोंग्स करेगा, सो इट इज ऑब्वियसली n स्क्वायर। नाउ टेल मी नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन का नंबर कितना होगा? इफ योर सेट A has n element, cardinality of A has n element, सोच रहे हो ना तुम लोग? Yes, sir. Yes, sir. सोचो थोड़ा। Number of symmetric relation, if your set A has n element, then how many number of symmetric relation you can find? अच्छा, तुम लोग को ये बोला गया है क्या, जो जो रेगुलरली
प्रेजेंट रह रहा है गेट के क्लास में, उसी का रीइंबर्समेंट होगा गेट का फीस, बाकी किसी का नहीं होगा। पता है ना ये? यस सर। हाँ, और उसके साथ साथ ये भी बोल रहा है कि अगर कोई रेगुलरली प्रेजेंट रहेगा तो उसका जो रिचार्ज वाला बात है ना वो भी हो सकता है, उसको भी फुलफिल किया जा सकता है। इसको लेके बात चल रहा है। सर भूल गए सर, रिचार्ज वाला तो बात ही भूल गए थे सर। नहीं, लास्ट मीटिंग में ये हुआ है कि ऐसे बात उठाया था, तो डिसीजन यही लिया गया है कि द स्टूडेंट्स हु आर कमिंग रेगुलरली इन क्लास, only college will reimburse their mobile recharge. So your present will be monitored regularly in your regular class also, not only the gate class, your regular class also. How many number of 7th year students is present here? सत्रह है सर, 7 नहीं। हाँ, टोटल 17 है, लेकिन 7 सब तो 7th ईयर का नहीं है लग रहा है हमको। कुछ तो है जो 2nd ईयर 5th ईयर का भी है। यस सर। कहाँ है सब बच्चा? गेट नहीं देगा वो लोग? 11 है सर टोटल। 7 बच्चा है सर यहाँ। ठीक है, तो इसका आंसर बताओ। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन इफ योर सेट हैज n एलिमेंट्स। n+1 सर। n+1 कैसे? सर नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, दैट मीन्स यहाँ पे तुम्हें सबसेट का सोचना पड़ेगा, 2 टू द पावर पे आएगा। ठीक है, लेकिन उसके पहले थोड़ा सोचना पड़ेगा कि ये क्या होगा। टू एन हो जाएगा सर। हम्म? 2n सर। अच्छा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ठीक है, तो सपोज दिस इज योर 1 नहीं लिखना चाहिए। अच्छा, 1,1 इस तरह है, 1,n, दिस इज योर 2, -n/2 होगा क्या? n/2 कितना आ रहा है और एक बार बताओ। 2n² टू टू द पावर n² माइनस n/2 n/2 इस तरह, पूरे या फिर पूरा? होल पे सर। तो 2 टू द पावर n/2 थोड़ा सा और है इस पे, n² माइनस n/2 थोड़ा सा चेंज होगा। बताओ थोड़ा और थोड़ा सोचो। ये नहीं है आंसर, और होगा। तो इस तरह ना लिख के सिमेट्रिक की तरह लिखते हैं, छोड़ दो। See, a relation will be symmetric। ठीक है, रिलेशन जब सिमेट्रिक होगा तब ऑब्वियसली डायगोनल के रिस्पेक्ट में, ये सपोज तुम्हारा डायगोनल है, एक्चुअली मैट्रिक्स आल्सो, द एसोसिएटेड मैट्रिक्स related to the symmetric relation is obviously a symmetric matrix. Now symmetric matrix तुम लोगों को पता है क्या है? बताओ भाई, symmetric matrix पता है ना क्या है? सब साइलेंट है। व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स? मतलब इधर का भी जो एलिमेंट होगा इधर का भी सेम एलिमेंट रहेगा, है ना? तो अभी तुम्हें सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक रिलेशन फॉर्म करना है,
तो यहाँ का भी कोई भी एलिमेंट तुम उठा लोगे तो यहाँ का एलिमेंट ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट। হ্যাঁ অঙ্কুশ, একটু ব্যস্ত আছি, তোকে 10-15 মিনিট পর কল করছি। तो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होगा कि इधर का कोई भी एक एलिमेंट तुम लोगे, सो दैट ऑब्वियसली कम टू दिस एलिमेंट, सॉरी दिस एलिमेंट ऑब्वियसली कम टू द सेट। सो दैट मीन्स यहाँ पे जितना एलिमेंट है डायगोनल को लेके टोटल जितना एलिमेंट तुम्हें मिलेगा उतना एलिमेंट को लेके तुम अगर सबसेट फॉर्म करोगे, दैट विल बी योर द नंबर ऑफ रिलेशन। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं एक्चुअली ये बोलना चाह रहा हूँ कि सपोज दिस इज योर 1,1, ओके, दिस इज योर 2,2 लाइक दैट, दिस इज योर n, नाउ सिमेट्रिक होगा, सो दैट इज 2,1 पे जो एलिमेंट भी रहेगा यहाँ पे 1,2 पे सेम एलिमेंट रहना चाहिए, देन ओनली इट विल बी सिमेट्रिक। ठीक है ना? यस सर। तो तुम अगर इस एलिमेंट को ले लिया 2,1, देन ऑटोमेटिकली 1,2 उसी सेट पे आना चाहिए। इफ दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू द सेट देन ऑब्वियसली दिस एलिमेंट विल कम टू दैट सेट। ठीक है, सो दैट मीन्स यहाँ पे टोटल कितना एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट है उसको देख लो, उतना एलिमेंट को लेके तुम कितना सबसेट फॉर्म कर पा रहे हो, दैट इज द क्वेश्चन एक्चुअली। सो इफ यू सी दैट, सो हियर योर नंबर ऑफ एलिमेंट विल बी, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इज n स्क्वायर, ठीक है, देन इट इज माइनस n/2, दिस इज एक्चुअली योर डायगोनल को छोड़ के जितना होगा, सो दैट मीन्स प्लस n यहाँ पे आएगा। डायगोनल को अगर ऐड करोगे तो डायगोनल को भी लेना पड़ेगा क्योंकि डायगोनल भी डिफरेंट एलिमेंट है फॉर सिमेट्रिक रिलेशन के लिए। सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होगा n स्क्वायर प्लस n/2। सो नंबर ऑफ सबसेट होगा 2 to the power n स्क्वायर प्लस n/2। So 2 to the power n into n plus 1/2. This is your required answer. आया समझ में या फिर रिपीट करूँ इसको? सब साइलेंट हो गया मतलब नहीं आंसर आया है। हो गया सर। हो गया? हो गया सर। यस सर। So and also one thing I am saying you that for your GATE examination you have to remember this only, 2 to the power n into n plus 1/2. You have to remember this because if you go to prove it on examination hall then you will lose so many marks. So just try to remember this digit or this number. Okay, then you will get the answer very easily. Otherwise you lose your time, and if you lose your time then you will able to solve less number of questions. Okay, now the next one is anti-symmetric. अच्छा, मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि डेफिनेशन जितना है बट ये तुम लोग थोड़ा इसको देख लेना क्योंकि प्रूफ हम बाद में बताएंगे। एंटीसिमेट्रिक इसका मतलब है इफ AB belongs to R and BA belongs to R relation, then obviously your A is equals to B, ये होगा। ठीक है, it is your anti-symmetric relation। और अच्छा, इसका भी तुम लोग ये थोड़ा फाइंड करना, हम कल चेक कर लेंगे एक बार कितना हुआ है, तुम मतलब तुम लोगों का रिजल्ट कितना मिला है। अच्छा, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट ये कितना होगा, देन लार्जेस्ट नंबर कितना होगा, और देन नंबर ऑफ एंटीसिमेट्रिक रिलेशन कितना होगा। ठीक है,
ये 3 तुम लोग फाइंड करोगे, हम चेक करेंगे कल। अच्छा, और कुछ होम टास्क और दे देते हैं। अच्छा, सेम है एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक रिलेशन के लिए भी सेम चीज जो यहाँ पे मैं 3 बोला हूँ। एसिमेट्रिक रिलेशन क्या है कि अगर इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, देन फॉर एसिमेट्रिक एक्स वाई नॉट बिलोंग्स टू आर होगा। ये है एसिमेट्रिक। इफ योर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, देन एक्स वाई नॉट बिलोंग्स टू आर, दैट इज योर एसिमेट्रिक। ओके, सो एसिमेट्रिक के लिए भी ये 3 चीज फाइंड करना है, एंड इसके साथ साथ ट्रांजिटिव के लिए भी करना है। ट्रांजिटिव रिलेशन ऑल ऑफ यू YX नो। ना, हाँ, YX does not सॉरी सॉरी, हाँ वाई एक्स होगा, सॉरी इट इज वाई एक्स होगा, हाँ एग्जैक्टली। वाई एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू वन आर, एंड with this you have to find transitive. You know what is transitive? That is x related y and y related to z, then your x related to z, that is your transitive relation. Transitive relation के लिए ये 3 फाइंड करना है, एंड उसके साथ you have to find r intersection s and r union s is symmetric or not. ये मैं कल चेक करूंगा, ठीक है। आज और टाइम भी नहीं है, कॉलेज भी जाना है। आया है पूरा होम टास्क। दिस इज ऑल ऑफ द होम टास्क, यू हैव टू फाइंड इट। ओके, टुमारो आई विल चेक इट। Obviously, if you are not able to solve, then I will discuss about it. Give your attendance in the chat box. Or if you have any questions, then you may ask. होम टास्क पूरा समझ में आया सबको, क्या क्या करना है? Yes, sir. ओके, गुड। कल हम चेक करेंगे इसको, ठीक है। अटेंडेंस और कल थोड़ा लॉन्ग क्लास ले, मतलब थोड़ा ज्यादा आवर्स का लेंगे। ऐसे सपोज 8:30 से 12 बजे तक। कल तो छुट्टी है, ऐसे भी काउंटिंग है। So tomorrow I will take class from 9 to 12. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Morning. ओके सर, थैंक यू सर। कुछ क्वेश्चंस है तो बताओ, नहीं तो ठीक है चलो। अच्छा, तुम लोगों का रिकॉर्डिंग का जरूरत है क्या इस क्लास का? Yes, sir. Okay, then what I will do, I will upload in on YouTube. Okay. कोई कुछ So बोल रहे थे, VCS पे बताओ। कर दीजिए। VCS पे? Yes, sir. लेकिन VCS पे तो अपलोड करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा हमको। मिलेगा क्या डिस्क्रीट पे अपलोड करने के लिए? YouTube पे देख लेना, YouTube अपलोड कर दूंगा, वो आसान भी होगा तुम लोग के लिए। क्यों बेकार VCS पे जाना है? ठीक है सर। ओके सर, कर दीजिए। ठीक है, हमें इस पे तो मिलेगा ही YouTube में। VCS से भी अच्छा होगा, इजीली फाइंड कर पाओगे। ये हमको VCS में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, देखा हूँ। ठीक है, फिर दे दिया ना सब लोग अटेंडेंस? यस सर। Yes, sir. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो रहा है। कोई एक सो रहा है क्या? अच्छा 16, हाँ मैं। ठीक है, ठीक है, कल मिलते हैं फिर, ठीक है। थैंक यू सर। बाय सर। Thank हाँ you, हाँ sir. हाँ, ओके सर। ओके ओके ओके, बाय।